बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं अफ़गानी पुलाव और काबली पुलाव भी जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें मटन ले लिया मैंने, बीफ भी ले सकते हैं आप। प्याज हैं 2 अदद और लहसुन है 1, दालचीनी, मोटी इलायची, बादियान का फूल 1 चम्मच वो धनिया है खुश्क और ज़ीरा, नमक, और ये एक और जो है ना प्याज जो है उसको छील लें लदा। इसके लिए चाहिए किशमिश और गाजरें जो हैं वो ऐसे काट लें। सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो है ना वो ऐसे कुछ लंबे काट लें, कुछ ऐसे इस तरीके से काट लें। चावलों को ऑलरेडी पानी में भिगो दिया। 4 कप चावल हैं ये बासमती राइस। तो ये जो खड़े मसाले आपको सामने नज़र आ रहे हैं, इनको जो है ना एक पोटली में जो बांध लें। ये मसाले हैं। तो 2 अदद ऑनियन, प्याज और लहसुन 1 अदद जो है उसको भी छील लें ऊपर से। ये उसको ऐसे ही डाल दें उसके अंदर, गोश्त के अंदर। अब हमने गालना है इसको। 6 कप ऑलरेडी पानी इसमें डाल के ऊपर रख लिया है मैंने। तो 2 जो है प्याज और 1 लहसुन वो भी इसके अंदर है, ऐसे ही डाल दिया। ठीक है। तो ये वो पोटली है, किसी कपड़े माल के अंदर जो सारे मसाले बने हुए हैं। धनिया, ज़ीरा, बादियान का फूल, मोटी इलायची और ज़ीरा जो है ना वो इसके अंदर है। अब हमने गोश्त को है जो है ना वो गालना है सारा गोश्त। तो अब ऊपर से बंद कर देते हैं और वेट करते हैं कि